श्री गणेशाय नमः। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। ऋष्यौचः शिव को वा हरि को वा रुद्र को वा विदक्षक अतेषु निर्गुण को वा हेतं नश्चिन्ति संशयम्। सूतुवाच यच्छादो हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परात् परमात्मनः तदेव शिवसंज्ञं हि वेदात् नितनो विदु। तस्मात् प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण संनिवता ताभ्यां तपः कृतं तत्र मूलस्थे च जले सुधी पञ्चक्रोशीति विख्याता काशी सर्वातिवल्लभा व्याप्तं च सकलं हेत जजलं विश्वतो संभाव्य मायया युक्तस्तत्र सुप्तो हरिसवे नारायणेति विख्यातो माया नारायणी मता तन्नाभिकमले यो जातः स च पितामहः तेनैव तपसा दृष्टः स वे विष्णुरुदाहत उभयो बाध शमने यदुपम दशितं बुधा महादेवेति विख्यातं निर्गुणेन शिवेन हि तेन प्रोक्तमहं शम्भु भविष्यामि कबलातः रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारक ध्याननाथ चैव सर्वेशा मरूपो रूपवान् भूत स एव च शिव साक्षात् तत्त्ववात्सल्यकारक शिवे त्रिगुणसम्भिन्ने रुद्रे तु गुणधामिनि वस्तुतो न हि भेदो सित सर्वणे तदृष्णे यथा समान रूप प्रमाणो संभक्त गति प्रदो समानाखिल सेव्यो नाना लीला विहारिणो सर्वथा शिवरूपो हि रुद्रो रौद्र पराक्रम उत्पन्नो भक्त कार्याथ हरिब्रह्मा सहायकृत अन्ये च ये समुत्पन्ना यथा न क्रमतो लयम् यान्ति नैव तथा रुद्रः शिवे रुद्रो विलीयते दैवे रुद्रं मिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृता इमे इमानुद्रो मिलित्वा तु न याति श्रुतिशासनम् सर्वे रुद्र भजन्त्येव रुद्र कच्छेदजेन हि स्वात्मना भक्तवात्सल्या ध्वजत्येव कदाचन अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिंस्ते लीनतां गता तेनैव रुद्रं ते प्राप्तां कालेन महता बुधा रुद्रभक्तास्तु ये केचित् तत्क्षणं शिवतां गता अन्यपेक्षा न वेतेषां श्रुतिरेषा सनातनी अज्ञानं विविधं हेत विज्ञानं विविधं नहि तत्प्रकारमहं वश्ये शृणुताद्रतो द्विजा ब्रह्मादितृणप्रयन्तं यदेकच्छिद् दृश्यते त्विह तत्सर्वं शिव एवासीत् मिथ्या नानातव कल्पना
सृष्टिपूर्व शिव प्रोक्ता सृष्टिमध्ये शिवस्तथा सृष्टिरन्ते शिव प्रोक्ता सर्वशून्ये सदाशिव तस्मात् चतुर्गणा प्रोक्तः शिव एव मुनीश्वरा स एव सगुणो ज्ञेय शक्तिमत्वादिधापि स येनेव विष्णवेदता सर्वे वेदा सनातना वर्णमात्राहनेकाक्ष ध्यानं स्वस्य च पूजनम् ईशान सर्वविधानाम श्रुतिरेषा सनातनी वेदकर्ता वेदपति सत्समाच्छम्भुरुद्रः रुद्रहतः स एव शङ्कर साक्षात् सर्वानुग्रहकारक कर्ता भर्ता च हर्ता स साक्षी निर्गुण एव स अन्येषां कर्माणं च कालस्य कलना नहि महाकाल स्वयं साक्षात् महाकाली समाश्रित यथा च ब्राह्मणा रुद्रं तथा कालीं प्रचक्षते सर्वताभ्यां ततः प्राप्त मिथ्या सत्यलीलया न तस्योत्पादकः कच्चिदुता न तस्य हि स्वयं सर्वस्य हेतुस्ते कार्यभूता च युतादय स्वयं च कारणं कार्य स्वस्य नीव कदाचन एकोपयनेकतां यातो पयनेकोपयकेतां कथां व्रजेत् एकं बीजं बहिर्भूत्वा पुनः बीजं च जायते बहुत्वे च स्वयं सर्व शिवरूपी महेश्वर एतत्तत्परं शिवज्ञानं त्वत्तस् तस्तदुदाहतं जानामि ज्ञानवानेन नान्यकच्छेदईश्वरा मुन्युरुचः ज्ञानं सलक्षणं ब्रूहि यज्ञात्वा शिवतां व्रजेत् कथं शिवक्ष सर्ववा शिव एव च व्यास उवाच एतदाकर्ण्यवचनं सूतः पौराणिकोत्तमः स्मृत्वा शिवपदां भोजं मुनिस्तान् ब्रवीद्वच इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहित्या सगुण निर्गुण देव वर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी।